Hello, hi everyone. Today we are conducting our Avathon 2022 by Google Developer Friends Club Avantika University, and today we have a very expert Flutter developer, Mr. Shirish Shukla, with us. He is an expert Flutter developer as well as a Google Developer Group speaker. He is a blogger at Medium as well as a community member at Stack Overflow. He is an experienced Android developer with a demonstrated history of working in the information technology and services industry. He is a skilled Android presentation skills, Flutter, and Dart expert. He has a strong engineering professional with a bachelor's degree focused in electronics and communication engineering from Sri Vaishnav Institute of Technology and Science. So now let's have a wonderful session on Flutter technology with him. Over to you, Shirish. Okay, so good evening, guys. My name is Shirsh, and today we are to discussing on basic things of Flutter, as well as after that we are discussing which platform and which ID we are using for the Flutter development as well. So let's start. Okay, so what is Flutter? So Flutter is basically a open source UI development kit that are developed by Google, and it's mostly created application for Android, iOS, Linux, macOS, embedded device, Google Fuchsia. So that's all the platforms we can create any type of single applications by Flutter. And basically at the end you see I am focusing just a minute, just a minute. I think some problem is there. Okay, so are you able to see my screen? Right? Just a minute, I will see. Check. Okay, that's done. Okay, so start from the beginning. Okay, so good evening, guys. So we are here for discussing basically with main things of Flutter, and basically we are discussing now for basic things of Flutter, as well as after that we are discussing which platforms and which ID we are using for Flutter development as well. So let's start. So first thing is, what is Flutter? So Flutter is basically a open source UI development kit that is developed by Google, and it was a launch in 2017 in development mode, and on that time our team Sneap, a product manager of Flutter, that are introducing Flutter as for the all the platforms, like as you see on my screen. Flutter platform supported for Android, iOS, Linux, macOS, Windows, embedded, and Google Fuchsia. So what exactly does it mean? You can create a single code applications and run it any type of platforms. Like सारे platforms से आप single code based applications को you can run easily on it. And also in the end you see Google Fuchsia. So what exactly does it mean? Google Fuchsia is basically Google are working on the newer OS. If you are some familiar of the Flutter, you see Fuchsia OS Google is working on some year was ago, and also probably 1 to 2 years after it, Google Fuchsia is on a releasing mode. So after it, Flutter his own OS also. Like what exactly does it mean? Like अभी आप जो भी application run करते हो तो वो other platforms पे run होती है. But after Google Fuchsia is comes to all around it. So Flutter is also on our own OS as well. So that's the kind of things, like it's a Linux based operating system, and it's similar to, we can say, Google Chrome OS or maybe Android as well. So that's the kind of things Google working on that. Okay, okay, so let's see its quality, Flutter, and all the things we can see one by one. So as you see, expensive, beautiful UI.
So what exactly does it mean? uh, you can manage every screen pixels easily, like if you talk about another platforms like अगर मैं एंड्रॉयड और iOS सेम थिंग्स, अगर एंड्रॉयड और iOS में अगर कोई मेरे को एनिमेशन बनाना है या किसी भी टाइप का अगर यूआई को रेंडर कर रहा है, so on that time I am just maybe we can say criteria in there, like every type of animations or UI we can't be creating there. Why? Because there is own widgets and on the screen sizes in there, on the screen widget in there. So हम उसमें पिक्सल को मैनेज नहीं कर सकते. सो इन अ फ्लटर यू कैन मैनेज ऑल द पिक्सल्स लाइक एज यू सी इन माई स्क्रीन. सो अगर कोई मेरा डिज़ाइनर बोलता है कि कोई पिक्सल का मतलब कुछ टाइप का अगर उनको टूल बार बनाना है, कुछ भी बॉटम से एनिमेशंस करना है या कुछ भी किसी भी टाइप का स्क्रीन यूआई विजेट बनाना है, सो आई एम इजीली क्रिएटेड in Flutter as compared to Android or iOS, we can say. Okay, so another main good thing is animations. I think you all knows animations very well. If you are a programmer or maybe you can create any type of things in your programming time. So if I will talk about mobile applications, so I'm in Android or iOS, maybe in also as a React Native. So we face lot of things, in, and also we can say many libraries are including there to creating some kind of animations. Like मेरे को अगर कोई एनिमेशन बनाना है, so there is already lot of libraries we can say in a React Native, or maybe we can say in Android. So there is not library, but there is lot of code in there. I need to be written in Android or iOS. So in a Flutter, what exactly good purpose in there? I am already one things I will just want to focus on there. All the things are Flutter in a widget. So widget tree are creating are by T structure, and like you see my screen, there is a beer, and when I am entering my email ID, they focusing on my email ID password even in a sign up button. So अगर मेरे को सेम मेरा डिज़ाइन अगर बोल मतलब डिज़ाइनर कहता है कि इस टाइप का एनिमेशन आपको एंड्रॉयड या iOS में बनाना है, सो आई just want to lot of codes I need to be written in there. But in a Flutter, there is less code of lines we need to be written. Also, as you see, there is lot of in widget is also in there. Twin, hero, silver, transform, fade in, also physical based animation. Uh, Basically, this all the kinds of widget in there in Flutter, they are predefined, like they are not getting by library. Like ये मुझे Flutter के by default packages में get होते हैं. So I am easily to use in all the packages, and also I'm easily to create all the things properly in there. So also if you are familiar with so much animations, like if I talk about hero, so hero widget is something like अगर सिंगल मतलब सिंगल स्क्रीन का अगर सेकंड स्क्रीन पे आपको वही एनिमेटेड विजेट को दिखाना है, सो ऑन द टाइम ऑफ हीरो, और मे बी वी कैन से फिजिकल बेस्ड. सो फिजिकल बेस्ड इज समथिंग लाइक आपने देखोगे एनिमेशंस की कोई अगर बॉल अगर कहीं भी अगर टिप मतलब बाउंस हो रही है और उसका एनिमेशंस दिखा है, सो दिस काइंड ऑफ एनिमेशंस very properly we can create in a Flutter, but in a part of the other things we face so much problems. Okay, so third thing is a fast. Why I'm written in there? Because like fast, because Flutter is providing a very like इसका जो मेन रेंडर इंजन है स्किया, that are mainly developed for the gaming platforms. like अगर आपने कोई अगर आप जो भी एप्लीकेशंस आप देखते हो गेमिंग एप्लीकेशन देखते हो तो उसका रेंडरिंग वेरी फास्ट होता है. सो यूनिटी भी ऑल्सो वन ऑफ द मेन गुड पर्पज इन देयर. लाइक यूनिटी से मतलब गेमिंग applications create over there. So same things we are using, like same things Google using in Flutter. So Skia engine is basically render all the things like you see is this type of
maybe some kind of Iron Man, some things. So if someone asks me like creating this kind of animation, so maybe what I will say, maybe it's 50 or 30, 60 lines of code. We can easily creating this type of things, and let's compare to React Native or maybe Android iOS. So we can easily create because अगर मैं सेम एनिमेशन तो ये फ्लेयर से बना हुआ है, सो some kind of images we need to be managing by the our actions and easily adapting by the single UI. Also you see 16 fps. So what exactly does it mean? uh, अगर 60 एमपीएस मतलब 16 फ्रेम पर सेकंड, अगर मतलब कोई भी अगर आपके सामने अगर इमेज, जैसा आपने ओल्डर टाइम पे आपने देखा होगा कि कोई जो पिक्चर्स के आपको स्क्रीन दिखते थे, जो पिक्सल मतलब इस मतलब स्क्रीन बाय स्क्रीन आपको पिक्चर दिखाई देते थे, 16 फ्रेम पर सेकंड ट्राई करते थे। वाई? बिकॉज इट्स अ ह्यूमन बिहेवियर। अगर कोई भी यूआई या कोई भी इमेज अगर 16 फ्रेम पर सेकंड से आपके सामने से अगर निकलती है, तो ह्यूमन बिहेवियर ऐसा है कि वो उसको स्मूथ समझते हैं। तो फ्लटर्स ट्राई सेम थिंग इज फ्लटर सेम ट्राई सेम थिंग इन इसका इन काइंड ऑफ animations or all the widgetry in there. So that's kind of things. Okay, so we go for the other slide. Productivity. uh, Okay, so before that, before a Flutter development, I am using Android development. So on that time, I'm just saying my scenario. अगर मैं 5 to 6 पेजेस ऑफ एप्लीकेशन अगर बना रहा हूँ, और अगर आगे एप्लीकेशन में मेरे को कोई भी यूआई उस टाइम पे रेंडर करना है, तो अगर मैंने बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दिए, तो उस टाइम पे अगर मेरे को स्क्रीन पे अगर कोई भी चीज़ को रेंडर करते दिखाना उसी सेकंड की व्हाट एग्जैक्टली टेक्स्ट आई एम रिटन और व्हाट एग्जैक्टली बटन डिज़ाइन आई एम रिटन इन माय कोड, सो उस टाइम पे मेरे को पूरी एप्लीकेशन को रन कराना पड़ेगा। बट इन अ फ्लटर it's a hot reload feature in there, like I'm just creating my code and hot reload I'm doing. So same time kind of things I am getting easily on my mobile। जो जो भी मैंने कोड करा है वो मैं मोबाइल पे देख सकता हूँ कि जो यूआई रेंडर करी। सो व्हाट एग्जैक्टली आई एम गेटिंग 3x प्रोडक्टिविटी। जो मेरा काम 3 घंटे में उस पहले होता था कोई भी एप्लीकेशन बनाने में, वो अब 1 आवर्स के अंदर भी कंप्लीट हो सकता है सेम चीज़। Okay, so we go for the another. Okay, uh, I think okay. So I just want to say another thing is basically आपने बहुत मतलब you hear so many purpose many website or maybe YouTube's that is Flutter is basically rendering a native UI. So what does it exactly means? Native UI means if we talk about the React Native, because there is also a hybrid language. So React Native is basically performing our own render, and there is some kind of bridge, and they are getting in our native Android में अलग उसके जो भी buttons, अगर जो भी Android अगर मैं application बना रहा हूँ React Native के थ्रू, तो उसके buttons और React Native का एक bridge के form में मेरे attached है। So there is why? Because in there, because they are not written by our native bridges, because its own in rendering code in there, and by the bridges I am getting this kind of things. And you see OEM widget. Basically, if you are creating any type of iOS or Android application, so you see iOS का अलग कीबोर्ड होता है, एंड्रॉयड का अपना एक प्री डिफाइंड कीबोर्ड होता है, उसके डिजाइन एंड ऑल द टूल्स अंदर। सो अगर इसका मतलब कोई भी हाइब्रिड एप्लीकेशन इफ आई एम क्रिएटेड, so this kind of issues maybe I am faces in years. Why? Because maybe every update iOS अगर अपना विजेट अपडेट कर सकता है, इवन एंड्रॉयड। सो उस टाइम पे मेरे को उसके विजेट्स या उसके मतलब जो मतलब प्री डिफाइंड थिंग्स है वो यूज़ नहीं करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि मेरा और ओन रेंडर उस टाइम पे वर्क कर रहा है फ्लटर का। So what does that filter exactly doing?
there is Dart virtual machines platform is using, and by the using of Skia rendering engine, that is basically a gaming engine, and using many platforms, Chrome, Firefox, so they are using where there, and same things we are using in a Flutter as well. So that's the kind of things we are doing in Flutter. Okay, so if you are familiar with object tree in Java as well, so what exactly in a Flutter doing in our architecture? So Flutter takes very seriously tree architecture in our application part. So what exactly does it mean? Like अगर आप कोई भी application बनाते हो तो first you are seeing many things like main.dart class in there. So आप first there is आप मतलब material widget define करोगे इसके अंदर इसके for in one by one. So there is a kind of widget tree are creating by there. So what exactly you are getting after main thing मीन्स लाइक अगर आपको थर्ड पेज पे कोई चेंज करना है और वो आपके फर्स्ट पेज पे कोई चेंजेस को अटैच करता है, तो देर इज काइंड ऑफ ट्री आर अटैचिंग इन देयर, so you can easily adopt and easily get this kind of data in there. That's the reason Flutter are using this kind of widget tree. Okay, so as I told you, like Flutter is already predefined widget already and available. So जो आप Android और iOS में अगर कोई आपको applications बनाना रहती थी, so there's lot of problems you are facing because like this kind of things is a WhatsApp chat. Like अगर आपने देखा होगा WhatsApp chat में आपका images नाम और उसके आगे जो भी count. So there is Flutter is already provide a list style widget, so you can easily use by 5 to 6 lines of code. You don't need to be create many type of widget or many type of layout, all the things. It is also stepper, like जो भी आप process complete करते आ रहे हैं, stepper kind of things you are using in there. Also divider in there. So like dialog is also lot of widgets for available, simple वाला dialog, all the widgets in there. Like bottom sheet, if you are a Android developer, so you know like अगर bottom sheet, same thing if I am creating bottom sheet in Android, so what exactly I am doing in there, I am creating a activity and then bottom sheet fragment and then attaching by the interface. So that's the kind of things I am using by the bottom sheet. But if you told me to create in a Flutter, so I'm easily created. Why? Because there is already widget available in there. Also by the actions, or maybe we can say easily easily detected what exactly bottom sheet are getting. So my main page also easily detect what state is updated on my bottom sheet and what exactly item I am selected. So that's why it's easily doing all the things. So so that's the kind of Flutter is exactly we are reading in there. It's a build fast, it's productive, it's open source. Okay, so it's a beautiful first thing you see. Why is it mean? Because as first slide you see, you can manage all the pixels. You can easily manage all the pixel and creating widget according to that. So it's like as you see this type of UI. So आप कोई सी भी UI इजीली अडॉप्ट मतलब इजीली क्रिएट कर सकते हो फ्लटर में, क्योंकि आपके पास सारे कस्टम विजेट्स और सारी यूआई जो पिक्सल के ऊपर रेंडर करना है वो आपके पास अवेलेबल है, फुल स्क्रीन पे अवेलेबल है। सो आप उसके हिसाब से कस्टम विजेट अवेलेबल बना सकते हो। देर इज़ अ फास्ट, वाई बिकॉज इट्स ओके जस्ट अ मिनट, it's less time to take your build up in there. Like if like someone ask me like कि आपको कोई application बनाना है and they are asking me to choose any type sorry they are asking me to choose any of this like Flutter or maybe iOS or Android. So I'm choosing Flutter. Why? Because it's a single code based applications, run all the platforms,
एंड अनदर थिंग इज जो भी मेरे को यूआई या मतलब आर्किटेक्चर बेस पे अगर कोई भी मेनली तो आपका यूआई है ही सही कि यूआई पे आप जो भी क्रिएट इजीली करोगे वो सिंगल कोड बेस पे और all the things you can easily manage by the custom way like is for the react native there are a lot of libraries but in a flutter you don't be rely on that maybe some kind of things like प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट थिंग्स पे आपको रिलाई होना पड़ता है बिकॉज ब्लूटूथ या स्पीकर या माइक्रोफोन दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी कांट बी मैनेज बिकॉज इट्स ओएस डिपेंडेंट थिंग्स so we need to manage by the OS but apart from the UI you can easily manage that's why it's fast and the third is productive what I am already told you before it like आप कोई भी कोड को मतलब जो सिंगल कोड बेस्ड एप्लीकेशन है उसको रन टाइम पे आप चेक कर सकते हो आपका जो टाइम लिमिट है कोई भी प्रोडक्ट बनाने का वो उसके अकॉर्डिंग लेस ही होगा and last fourth thing is it's open source like you can easily get all the things maybe we can say widget things or maybe we can say like अगर आप मतलब फ्लटर कम्युनिटी में अगर आप खुद भी अगर कोई चीज़ को प्रोवाइड देखना चाहते हो कि किस टाइप ऑफ मतलब कोई चीज़ को कैसे क्रिएट करा हुआ है so you can easily get from there also it's a open community that's why you can easily get issues and also their answer you can easily achieve by there like अगर आप older platform पे अगर आपके वर्क कर रहे हो और आपका वर्जन अपडेट हो चुका है so you can easily get by the github you can answer easily get from there so okay so that's all the IDs are supported by Flutter, Android, IntelliJ, Visual Studio, Sumline or WordStorm. Basically, if you are an Android developer, so I just preferring you Android Studio mainly. And if you comes from the Intel, we maybe it's you come from the web or maybe iOS, so you go for the Visual Studio because it's like community is very large and it's easy to use as compared to other. Or maybe if you are already used for any other things, you can use. Okay, that's a good. Okay, so things you should know before the things like okay, so like if you are a beginner and just want to starting from the beginning any Flutter project, so just go from the Flutter code lab. Like I'm showing you how it is working. Like as you see, there is 38 minutes are remaining in my there. Why they are showing like half hour में ये सब चीज़ें मैं slides complete कर सकता हूँ and all the things are properly written there like I'm showing you. First thing they are showing you how set up environment for Android, iOS, macOS. Like after that, what commands I'm written before it for the project creations. So as you see, it's my code base. Like it's starting from the material widget and then it's creating all the things, stateless and all. So this kind of screens after widget creating in there packages. Okay, I will ask you this as well. So that's the kind of things you can if you are starting from the beginner, so go from there because like if अगर आप कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करते हो तो इवन फ्रॉम द स्टार्टिंग सो यू कैन इजीली गेट ऑल द इंफॉर्मेशन लाइक बेसिक में आपको कौन सी चीज़ को और कौन से पैकेजेस लाइक you don't need to be go from other places all the things are available in there okay so let's see another things dot pad okay so first we see in Android and then I'm showing you dot pad how exactly is it work okay so first I'm creating a new project let's see how Flutter project I'm creating on Android let's see process one by one okay, sorry
on creating Flutter project. That's my path of Flutter. I'm creating a demo applications with my profession, and I just want to describe anything else. I'm there, and also like they are showing in applications, because at this time I'm creating applications. Like अगर आपको कोई plugin बनाना है package, so you can choose there. Also, like they are a hybrid language, so which things you need to be managed by the native way. Like अगर अगर मैं आपको एक मिनट शो करता हूँ, like this kind of my applications, and inside of there is iOS platform, iOS and Android, both of this folder in there. Why? Because if I need to be changing anything in my predefined we can say OS, like अगर मेरी Flutter एप्लीकेशन एंड्रॉयड में कुछ मेरे को प्रीडिफाइंड अगर कोई भी चीज़ों को रेंडर करना है, या व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू से, लाइक ब्लूटूथ मैनेज करना है, सो Flutter is not Flutter codes are not available for this thing because it's native things. So I'm just doing in my our own native code. Like if you are Android developer, so you can easily detect what exactly I am doing. Like I am doing in there. Like I am creating all the codes in my main activity, and उससे होगा क्या कि जैसे अगर आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो और आपको एंड्रॉयड और आईओएस के मेनली जो सिस्टम आर्किटेक्चर थिंग्स है, मे ब्लूटूथ स्पीकर, मे वी कैन से एनी काइंड ऑफ थिंग्स, लाइक आपको अपनी उसके नेटिव मेन बेस पे आपको चेंजेस करना है, तो आप उसके थ्रू मतलब उसका प्री डिफाइंड कोड वहाँ पे रिट्राइट कर सकते हो इवन, like some kind of things we can't be managing a Flutter. Basically, those things we can easily create by our own native way. Like I'm taking you example, like जैसे मेरी application है और कुछ मॉड्यूल्स मेरे ऑलरेडी अगर नेटिव में बने हुए हैं, या कुछ मॉड्यूल्स के लिए मेरे को सिस्टम आर्किटेक्चर डिपेंडेंट थिंग्स पे रिक्वायर्ड हूँ मैं, सो मैं वो एंड्रॉयड और आईओएस में इजीली राइट कर सकता हूँ। जैसे मैंने आपको एंड्रॉयड में बताया, मेन एक्टिविटी में मैं उसका कोड राइट कर लूँगा, इवन आईओएस में भी। सो after writing my code, what exactly I am doing, I am creating a bridge between my Flutter codes and my iOS by the method channels. So method channel is what exactly doing? Method channel is exactly like I am क्लिकिंग ऑन एनी टाइप ऑफ बटन इन माई फ्लटर ऐप। लाइक मैं अगर कोई भी बटन क्लिक करता हूँ अगर फ्लटर एप्लीकेशन में, और उसका कोड अगर मैंने मेरे एंड्रॉयड के बाय डिफ़ॉल्ट मेन एक्टिविटी में लिखा हुआ है या आईओएस के अंदर लिखा हुआ है, सो मैं उसके थ्रू उस कोड को मतलब उस चीज़ को रन करा सकता हूँ। सो आपको कोई अगर कोई प्लेटफॉर्म पे अगर कोई कोई भी प्रॉब्लम अगर सिस्टम डिपेंडेंट थिंग आती है, तो आप अपना नेटिव कोड बेस पे एप्लीकेशन राइट कर सकते हो। उसके लिए आपको कोई अदर या कोई मतलब लाइब्रेरी या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। अगर लाइब्रेरी मतलब ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन देयर, बिकॉज लाइक इट्स ऑलरेडी बिल्ड अप बाय फेमस डेवलपर्स एंड ऑल, बट अगर आपको स्मॉल थिंग्स कोई भी चीज़ को राइट करना है, तो यू कैन चूज बाय our own way, and changes also in there. So sorry, I'm uh, again we are creating a new project. Okay, so we see in there. So आप उसके लिए अपनी लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हो, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट अभी एंड्रॉयड में कॉटेन और आईओएस में स्विफ्ट यूज़ हो रही। यू कैन ऑल्सो चेंजिंग देयर, like I'm Java or maybe I'm whatever language I'm preferring for the my native way, so I'm choosing there. और प्लेटफॉर्म में जैसे आपका वेब, बेसिकली मेरा अभी वर्जन अपडेटेड नहीं है, सो आफ्टर 2.10 you can also adopt Linux, Mac OS and Windows as well. So you can create a single code based applications for all the platforms: Android, iOS, Linux, Mac OS, Web, Windows. So don't go, don't. Okay, let's see what is doing after it. Okay,
just a minute, it's build up in there. And on the time I'm creating my, it's build up. I think it's take some time. On the time I'm using Chrome OS. Okay. So also web supported in there. So I'm running on this Chrome OS. So basically first when I'm running in, so you can get a counter example. Basically Flutter provides any type of applications by default counter code available in there. So I'm showing you what exactly written in there. So basically it start from the my run app and material app. As I told you, like first widget is your material app. So this widget is basically providing you all the UI part, or we can say or application part. So you can easily detect, as you see theme option is showing in there. So मैं full applications का जो भी मेरे को theming change करना है, so I am easily changing by this, and not to be going one by one page and changing this color. So all the things I am easily manage. Also I am showing you what things they are available, color, build directions, also navigation also, and all the things I also managing easily in there. And if I will talk about my code, let's see what things are actually running there. As you see, that's the counter applications are in there. So let's see, single like as the kind of things, if this kind of things you can easily create your own applications and changing anything easily in their widget tree. And if I talk about my, if like अगर आपके पास एंड्रॉयड स्टूडियो कोई आईडी सपोर्टेड नहीं है, so what exactly you are doing, you can just go to the Google, like जो अभी मैं डार्ट पेट बताने वाला हूँ. So I am just going in there and प्राइमली ये आपको एक सिंपल एग्जांपल ये लोग का प्रोवाइड कर रहा है. ओके, सो एज यू सी in my Android applications, when I am creating a simple demo, this kind of counter demo or I'm getting in there. And like I'm not choosing all the things, but आप जब प्रैक्टिस करो या आपको कोई एक सिंपल सा सिनेरियो अगर कभी टेस्ट करना है, या तो आप डार्ट पेड का यूज़ कर सकते हो, बिकॉज इट्स इजीली कंट्रोल योर कोड. And what exactly process I need to do. Okay, okay, let's see, there is an example in there. So सेम एग्जांपल जो अभी उसमें अवेलेबल था मेरे को एंड्रॉयड में, ऑल्सो जो मैं इसमें रन करा रहा हूँ. सो यहाँ पे डार्ट पेड में आपको कंपाइलर आपका अवेलेबल है फ्लटर और डार्ट के एप्लीकेशंस के लिए. सो if I want to compile any type of applications like single page applications, so we can say, because it's depend on the internet also in there. So as you see, मैं अगर कोई आईडी सपोर्ट अगर उस कोई भी अवेलेबल नहीं भी है, सो आई कैन इजीली manage this Flutter codes and written, and also maybe I can practice any place. So like I am changing just a minute, I am changing, like अगर मैं इसको चेंज करता हूँ एक रो के अंदर ट्राई करता हूँ, इंक्रीमेंट है और things. Let's see, children widget in available there. Okay, in the increment. Okay, I am remove. Okay, and एक सेम थिंग अब मैं मेथड इसके लिए क्रिएट करता हूँ डिक्रीमेंट करने के लिए. इट्स ओके, सो दिस मेथड आई एम कॉलिंग इन देयर.
ओके, तो अगर मेरे पास कोई आईडी से उस अवेलेबल नहीं भी है, तो मैं अपने डार्क पेज पे मेरे कोड को टेस्ट भी कर सकता हूँ। इवन कोई चीज़ों को अगर मतलब ट्राई करना है तो मैं यहाँ पे अवेलेबल कर सकता हूँ। यहाँ पे इजीली मैनेज हो जाती मेरी फ्लटर एप्लीकेशन, लाइक की आई एम adding two buttons, increment and increment. So that's the kind of things I am getting by dartpad. You can also use there. And okay, so also if I ask about another things as well, like that's all the examples also available in there. Like अगर आपने कोई स्टेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन अगर आप करना चाहते हो इसमें, दे आर ऑल्सो प्रोवाइडेड, लाइक प्रोवाइडर इज वन ऑफ दोज स्टेट मैनेजमेंट developer are mainly using there. So this kind of also in available in there. So as for the testing purpose, I am just preferring like आप dot pad use कर सकते हो, and if you are already available any ID, so that's it good. Okay, so okay, so third thing is, sorry, just a minute. Third thing is Firebase. Okay, so basically Firebase or Flutter is also a Google product, and Firebase is also. So बेसिकली आप अगर मतलब अगर आपकी एप्लीकेशंस को आप होस्ट करना चाहते हो, या आप सर्वर के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हो, so Firebase provide easily all the methods. And why? Because there is own items, sorry, there is own way, and all the methods are easily available in Flutter. Like if I'm talking about Firebase, it's we can say its name is Flutterfly. Firebase. So you just go for their documentations. So you can easily create all the type of applications, also how to implement it and all the things you can easily get in there. Also packages also in there available in there. Like if I talk about packages like library, so just go there, Flutterfly, Fire, and UPC. लाइक अगर आपको ऑथेंटिफिकेशन और एप्लीकेशन लगाना है, या क्लाउड स्टोरेज करना है, या मैसेजिंग टाइप का कोई चीज़ यूज़ करना है, सो लाइक यू आर यूजिंग इन एंड्रॉयड और iOS, already Firebase for messaging is the main purpose. So that's already available in also in there. So they all the libraries are you are available in there. Also it's very updated and popular. So like I'm showing you. So Firebase core. So let's see. So all libraries are already updated and easily get you in there. So you can. So just a minute. Um, okay. So uh, I also told you like Flutter is also available for the all the platforms. Like we can create for the Android, iOS, web, Windows, all the type of applications. Like as I already show you an example, this kind of application is a web application. So just a minute, I will say you. Yeah, it's a single page, and let me show you what kind of rendering stuff, yeah, they are using in there. So let me inspect. You can see uh, they are using canvas kit. So basically Flutter using two kind of rendering stuff in there. First is a HTML rendering kit, and second one is a canvas kit. So HTML rendering engine basically मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए रेंडर होता है, बिकॉज
there is not any type of UI interaction, lot of UI interaction is there. So on that time, like अगर मैं एप्लीकेशन को अगर मोबाइल पे रन करता हूँ, जैसे ये डेमो एप्लीकेशंस को अगर मैं मोबाइल पे कोई एप्लीकेशन रन करता हूँ, वेब एप्लीकेशन बनाता हूँ और उसको मोबाइल पे रेंडर होगा, ये सिंगल पेज, सॉरी, ये पेज को अगर मैं मोबाइल पे रन करता हूँ, तो उसका उस टाइम पे वो HTML रेंडर यूज़ होगा. बट इफ़ आई टॉक अबाउट द web, so on that time they are using canvas kit. Canvas kit is basically they are using because on the time we need to be very precious type of UI rendering stuff, like अगर आपको जैसे अगर फिग्मा टाइप ऑफ कोई एप्लीकेशन, आपको वेब एप्लीकेशन बनाना है, सो उस टाइम पे आपको यूआई मतलब रेंडरिंग स्टफ बहुत प्रीशियस चाहिए रहेंगे. तो कैनवास किट इज बेसिकली यूजिंग ऑल द थिंग्स very properly in there. So you just go and things in there. And also if we talk about the Windows and Linux applications, so on the Windows and Linux, like if I told you for the Windows applications, so Windows applications को basically आपको visual स्टूडियो की रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि जैसे आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशंस अगर आप फ्लटर पे रन करा भी रहे हो, तो एंड्रॉयड स्टूडियो रिक्वायर्ड होता है कोई भी प्लेटफॉर्म पे बिल्ड या उसको आगे डिप्लॉयमेंट के लिए. सेम इज फॉर द iOS, Xcode is required for the Windows, so you need to be Visual Studio in there. But if you talk about the web, you can easily create at any OS, so don't need it there. So another thing is I just want to be noticing in there is pub.dev. Like अगर आपको ये सेम एप्लीकेशन कोई सिंपल एप्लीकेशन बनाने वाला है और आगे उसमें रिक्वायर्ड लाइब्रेरी होने वाले, सो व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डू, फर्स्ट थिंग you just go there, pub dot pub.dev, and check whether your library is supported और नॉट फॉर द ऑल प्लेटफॉर्म्स. बिकॉज लाइक अगर मैं कोई लाइब्रेरी यूज़ करने वाला हूँ और वो सब प्लेटफॉर्म पे अगर यूज़ नहीं मतलब सपोर्टेड नहीं भी है, तो आगे जाके मेरे को कोड चेंज करना पड़ेगा. सो वेन एवर यू यूज़ एनी टाइप ऑफ पैकेज, I just prefer you just go for the pub.dev and checking its requirement, all the documentations, like its availability, it's like pub points and all the things. Like I'm using URL launcher for the launching. Basically इस पैकेज का मैं यूज़ करता हूँ लॉन्च करने के लिए. सो you can see it's a Flutter favorite, and Flutter favorite means like Flutter is asking like it's easy to develop and also preferring to use all the things. And also you can see like and all the counts, just see there. ऑल्सो अगर आपको उसके रिपोजिटरी पे अगर कोई इसके दिस काइंड ऑफ इशू यू कैन गेटिंग इन देयर, जस्ट गो देयर, एंड ऑल्सो all the things you can read by there. So whenever you use any type of library, so अगर आपकी एप्लीकेशन अगर एंड्रॉयड या iOS के लिए अगर आप बनाना, अगर मे बी इन अ चांस यू कैन यूज़ फॉर द सिंगल प्लेटफॉर्म, सो आप इजीली जस्ट चेक इन देयर एंड चेक योर लाइब्रेरी सपोर्टेड. बिकॉज अगर वो प्लेटफॉर्म को सपोर्ट नहीं करी, तो वो आपको उस टाइम पे कोड बेस में चेंज करना पड़ेगा कि दिस नॉट अवेलेबल फॉर दिस प्लेटफॉर्म. सो ऑल्सो यू कैन check Flutter favorite and all. Like Flutter favorite page is already only those library, like your URL launcher is getting Flutter favorite page, HTTP and image picker. Like this library are not getting Flutter favorite. So what does it Flutter favorite means? Like they're already they are taking only these libraries, like जो all आगे आपको यूज करना चाहिए. Like Flutter is providing this kind of page, you can see. like ये मतलब पैकेजेस आपके फ्लटर ने आइडेंटिफाई करें, एंड इट्स इन अ फ्यूचर इट्स लाइक दे आर ऑथराइज्ड बाय फ्लटर.
and they are picking by Flutter as well. So you can just go there and test it your own way. Okay, okay, that's a good thing. Uh, let's see. Let's come to the main point or in code base. Okay, so I think we need all the things and also code lab like already we told you. Okay, we all things. Okay, so before that, if you have any queries, please ask. I am taking 2 to 3 minutes regarding it. अगर आपको क्वेश्चन या कोई भी इशू इससे रिलेटेड है, you can ask or you can just messaging in there. We are here. Let's see. I'm waiting 2 minutes for that. Okay. One question is Focia is virtual OS. Uh, Basically, Focia, like Google is working on this OS, and it's it's kind of similar to Android or iOS or maybe Chrome OS. मेन थिंग इज व्हाट एग्जैक्टली इज कि ये ओएस आपका डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों को सपोर्ट करने वाला है. सो अगर आपकी एप्लीकेशन जो आगे मतलब अभी तो वो बीटा मोड पे मतलब अभी लिविंग मोड पे अवेलेबल नहीं, बट जब सोशा ओएस और अवेलेबल होगा तो वो आपके मोबाइल फोन्स और डेस्कटॉप डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेस्कटॉप पे हैं, जैसे क्रोम ओएस अवेलेबल है जो आपके टैबलेट्स में आता है. सो both of the platforms they are supported, and main things what exactly we are getting by Focia OS is we can easily detecting platform dependent things like आपने देखा होगा कि इस सेशन में मतलब कि बहुत बार अपन ने वो चीज़ों का रिलेट करा है कि सिस्टम डिपेंडेंट थिंग्स पे अपने को आ, मतलब कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट पे वर्क करना पड़ जाता है. लाइक एंड्रॉयड के लिए अपने को ब्लूटूथ का मेनली उसका ओवर ओन कोड इज देयर, सो वी नीड टू रिटर्न देयर, एंड ऑल्सो iOS के लिए भी उसका ओन कोड. बट लाइक अगर आपके पास फोशा ओएस अगर आपके मोबाइल फोन्स में अवेलेबल रहेगा, सो यू डोंट नीड टू बी एनी टाइप ऑफ लाइब्रेरी और एनीथिंग एल्स. लाइक अगर आप सेम थिंग अगर एंड्रॉयड डेवलपमेंट में अगर आप करते हो तो उसके लिए आपको कोई लाइब्रेरी यूज़ नहीं करना पड़ती अगर आप ब्लूटूथ या स्पीकर के रिगार्डिंग अगर कोई भी चेंजेस करते हो तो दैट द सेम थिंग्स you are getting in Fuchsia OS. Okay, so any another question after it? Um, uh, any question? Uh, okay, okay, that's it. Okay, so okay, so it's a task for you. Like आपको वन लाइक यू नीड टू बी क्रिएट 1 to 2 page applications, and whatever you need to things you need to be use animations or whatever things you need to be like you are creating, but main thing is it's a unique, and that's the time limit is 2 days. April 18 is our time limit deadline. So आप एक कोई भी एप्लीकेशन बनाए एंड वन छोटी सी एप्लीकेशन हो मे बी 1 to 2 पेज, और उसके अंदर वो यूनिक होना चाहिए, मतलब दे आर नॉट सिमिलर, मे बी दे आर अवेलेबल फॉर द गिटहब और लाइक डेट्स कॉपी फ्रॉम द अदर प्लेसेस. So it's maybe it's should be unique we can say, and like on the 18th April, before 18th April we can say you should be provide. Yeah, someone is asking that is he's making his first step. Yeah, yeah, like one of those is asking creating Flutter first applications. Yeah, you can use like as I already told you, Flutter code lab. Like अगर आप बिगनर भी है, मतलब अगर आप स्टार्ट भी कर रहे हैं एप्लीकेशंस का, अगर आपको इतना डीप नॉलेज नहीं है, you just go for there and reach out in there all the documentations like
आप इसमें जो मतलब इस मतलब बहुत नॉर्मल चीज़ से स्टार्टेड हैगा यहाँ पे कि आपको एसडीके को मैनेज कैसे करना है, प्लेटफॉर्म को कैसे सेटअप करना है। अगर आप एंड्रॉयड या मे बी इंटेल आईजे यूज़ करने वाले हो तो उस पर कैसे स्टेबल करना है। और आपकी एप्लीकेशन जैसे दिस लाइन्स ऑफ कोड आर बेसिकली hello program word like is showing in there. So I am preferring code lab mainly for this because आप कोई भी एप्लीकेशन अगर बनाना चाहते हो तो आप फर्स्ट थिंग इज प्रिफरिंग दिस एंड ऑल्सो Flutter documentation is also well settled good in there, so you just go there also. बट अगर आप यहाँ से देखते हो तो आपकी ऑलरेडी जो प्रोसेस है you can get. Also, as you told me, like first applications, yeah, also like now at the moment, like I'm asking you कि फ्लटर का 2.10 वर्जन के अपडेटेड पे ही आप काम करना, तो जो आपकी एप्लीकेशन है वो सारे प्लेटफॉर्म पे सपोर्टेड होगी। जैसे अब मैंने आपको दिखाया था कि मेरे एप्लीकेशंस पे सारे प्लेटफॉर्म दिखा रहा था, लिनक्स, विंडोज। सम ऑफ द थिंग्स आर नॉट बी गेटिंग इट्स हिडन। वाई? बिकॉज मेरा ओल्डर ओएस था उस टाइम पे। सो आप 2.10 के अपडेटेड फ्लटर ओएस पे वर्क करो और आप इजीली क्रिएट कर सकते हो आपकी एप्लीकेशन सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए। ओके, एनीवन हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग इट? और क्वेश्चन आपके किसी के पास? You can freely ask. Don't worry about any mistakenly or maybe think of. You can freely ask anything. I'm waiting for that. Anyone have any question? Uh, okay, 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 guys. So basically, it comes to the main or point. So basically, आप कोई भी टास्क आपका जैसे आप अभी बनाने वाले हो एप्लीकेशन, सो यू कैन 1 to 2 पेज एप्लीकेशन, आप एनिमेशन या कोई भी टाइप ऑफ विजेट यूज़ कर सकते हो आप। यू कैन फ्री फॉर्म देयर, बट दिस एप्लीकेशन शुड बी यूनिक एंड बिफोर 18th April you should be provide us top two participants. We are sending GDSC T-shirts, also stickers from its participant. And ऑल्सो अगर आप गिटहब पे प्रोजेक्ट लिंक शेयर करते हो तो आप gdsc avantika.edu.in, वन सेकेंड आई विल से gdsc@avantika.edu.in, इस पे आपकी गिटहब लिंक आप एक मेल में प्रोवाइड कर सकते हो। तो after 18th April, we are seeing all the applications and top two participants are getting a chance to getting a t-shirts and stickers from us. So thank you guys. Heaven, it's nice to tie. It's good to me like we are introducing and it's a great time we can achieve. So have a nice day. Thank you. Thanks for time. Okay. Bye. So it was an extremely wonderful session, Ashish. I hope you guys liked it. So now we will carry forward with wrapping up the session, and we have shared the task with you. The person who will complete will get the prizes by GDSC Avan. So hope you people will try to complete it as soon as possible and submit it, and we will look forward for the winners. Thank you everyone for joining the session, and thank you, Shesh.